हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश काले। मेरे चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। आज हम बात करने वाले दैट इज़ रिगार्डिंग व्हाट शुड बी द बिजनेस स्ट्रैटेजी एज पर एज मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न। सो स्ट्रैटेजी हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं दैट इज़ द सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू मीट योर ऑब्जेक्टिव और गोल। सो स्ट्रैटेजी शुड बी इन द मैन्युफैक्चरिंग दैट यू शुड अचीव योर गोल by adopting the process of manufacturing that should be cost effective, that should produce good quality and deliver the product to the customer within time. So step by step हम discuss करेंगे. So strategy is applicable to the all kind of businesses, that is if you consider the large businesses and if you consider the small business also, the strategy is important for the growth of the business and the success of the business. So first topic हम डिस्कस करेंगे what is the मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी। तो मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी डिवाइस करने के लिए हमको कुछ हमारे जो कंपनी के प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसके लिए हम सवाल प्रिपेयर करना चाहिए एंड इफ़ यू आंसर दोस क्वेश्चन दैट विल हेल्प टू डिवाइस द स्ट्रैटेजी ऑफ योर बिजनेस। सो एज पर एज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न द क्वेश्चन इज दैट व्हाट शुड वी मेक एंड हाउ वी शुड मेक, वेयर शुड वी मेक इट, हाउ कैन वी सेव मनी एंड टाइम while manufacturing, and how we can produce the good quality of products. So if you answer this question, then that will greatly help to your strategy. So why strategy is important, why we should adopt the strategy to meet our day-to-day requirement. The strategy will help to reduce the production waste. हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो वेस्ट जनरेशन होता है वो कम कर सकते हैं. Deliver the product in time, then that improves product quality, make customer happy, and your business will be more ahead of your competitor. If you devise proper strategy, then your business will grow than your competitor. So what are the key part of the strategy as far as manufacturing is concerned? The first one is that is product design goal. So हमने while devising the strategy हमने ये क्वेश्चन हम खुद को पूछना चाहिए दैट वेदर वी आर मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड प्रोडक्ट और कस्टमाइज प्रोडक्ट। एग्जांपल है इसका टी शर्ट जो मार्केट में मिलता है दैट इज स्टैंडर्ड प्रोडक्ट एंड कस्टमाइज प्रोडक्ट हम कंसिडर करेंगे दैट इज टेलर मेड प्रोडक्ट, इज ए कस्टमाइज प्रोडक्ट। प्रोडक्शन का प्रोसेस का चॉइस सिलेक्शन करना चाहिए, उसमें आता है आर यू अडेप्टिंग द मैनुअल प्रोसेस दैट इज लेबर ओरिएंटेड, ऑटोमेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दैट इज मैनुअल एंड ऑटोमेशन। Then are we manufacturing everything in our factory or we are outsourcing some of the production to the supplier or vendors? Capacity planning करना चाहिए that how much your factory can produce with the maximum capacity utilization, and how to scale up your production as per as the peak production requirement is concerned in the period of festival season. फैक्ट्री लोकेशन डिसाइड करने में हमको स्ट्रेटेजी डिवाइस करना चाहिए दैट शुड कंसिडर द रॉ मटेरियल सप्लायर, देन लेबर अवेलेबिलिटी, देन कस्टमर लोकेशन. डिपेंडेंट ऑन दैट योर फैक्ट्री लोकेशन शुड बी प्रॉपरली डिसाइडेड. ट्रांसपोर्टेशन को हमको कंसिडर करना पड़ता है दैट विल ऐड टू योर कॉस्ट. आपका ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम रहेगा देन दैट विल डेफिनेटली ऐड टू योर कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट. टेक्नोलॉजी इन इनोवेशन में हमको न्यू टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन के बारे में प्लान करना चाहिए एंड देन यू शुड हैव सिस्टमैटिक प्लान टू रिप्लेस योर ओल्ड मशीनरी विच आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. सप्लाई चेन एंड डिलीवरी का भी हमको ख्याल रखना चाहिए बिकॉज रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी एंड अराइवल ऑफ द रॉ मटेरियल विल डेफिनेटली अफेक्ट योर मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल एंड डिलीवरी टू द कस्टमर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट योर फिनिश प्रोडक्ट शुड रीच टू द कस्टमर विद इन टाइम. कॉस्ट एंड क्वालिटी का बैलेंस हमने प्रॉपर अचीव करना चाहिए. यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज टू द क्वालिटी इफ यू आर कंसिडर द चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देन दैट शुड नॉट अफेक्ट योर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड यू शुड अडॉप्ट द अफोर्डेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट शुड बी डिलीवरिंग द प्रोडक्ट. पॉपुलर स्ट्रेटेजीज क्या है मैन्युफैक्चरिंग में? तो फर्स्ट वन इज दैट इज कॉस्ट लीडरशिप, दैट इज यू शुड मेक द प्रोडक्ट विच इज चीपर देन योर कॉम्पिटिटर. डिफरेंशिएट करना चाहिए दैट योर प्रोडक्ट शुड बी यूनिक. फ्लेक्सिबिलिटी रहना चाहिए. योर
you should be able to handle the customer requirement. If there are up and downs in the customer requirement, then you should be able to handle that. स्पीड चाहिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, then you should be able to deliver the product faster than your competitor to the customer. And aim of your manufacturing should be to deliver the higher quality product, best quality product. हमारा अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं रहेगा तो उसमें क्या आपके बिजनेस पर क्या उसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है. तो फर्स्ट वन इज दैट इज ओवर प्रोडक्शन. आपका अननेसेसरी प्रोडक्शन करके आपका कॉस्ट बढ़ेगा, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बढ़ेगा और आपका प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगा. कस्टमर को आप प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर सकेंगे एंड दैट यू विल क्रिएट द डिले इन द डिस्पैचेस, हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड द लोअर प्रॉफिट एंड directionless manufacturing that will affect your market position in the market compared to your competitor. So what are the real world example that which companies have adopted the best strategy? Toyota is the best example to understand. Toyota had adopted the lean manufacturing to reduce the manufacturing process waste, Kaizen for the continuous improvement, and they have established quality control at the every stage, that they should be able to control the quality at every stage and that will deliver the product of good quality to the customer. हम जो डिस्कस किया रिगार्डिंग द स्ट्रेटेजी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, इसका व्हाट इज द फाइनल टेक अवे एज पर एज इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आर कंसर्न. फाइनल टेक अवे आर वी शुड आस्क द क्वेश्चन टू आवरसेल्फ दैट व्हाट शुड आई प्रोड्यूस, हाउ कैन आई प्रोड्यूस इट बेटर and how do I deliver value to the customer, how we can deliver the best value to the customer. So these are the takeaways. So what we can quote at the end of the vlog, that machine don't produce the good quality product, a low cost product, but the strategy definitely deliver the good product at the lowest cost. And you should plan your strategy on day-to-day basis, and you should make the proper plan to achieve the targets of the strategy, whatever steps you have decided on day-to-day basis. Then that will definitely make your business successful. That will also help to deliver the good quality product to the customer at the lowest price. So this is all about today's video. Now we are closing the video. आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए. थैंक यू टू ज्वाइन माय वीडियो. थैंक यू वेरी मच.